चलो, so I was telling that as long as the concept of work is concerned, we will be given with some constant forces or some variable forces. तो कल के क्लास में whatever questions I gave you for the homework, they were resembling a standard shape, right? So either the force was in the shape of a rectangle or a triangle. तो अपने को area of a triangle निकालना था, and we have to calculate the area under the curve. That's it. Now, in today's class, we're going to see the concepts in which the force is a variable. And whenever I say the force is variable, I must specify कि वो variable किसके respect में है, या force is dependent on which factor. हो सकता है force distance पे dependent है, हो सकता है force speed पे dependent है, या time पे dependent है, and all that stuff. ठीक है. तो अगर I'm telling if the force is dependent on the distance, तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एक इक्वेशन गिवन होना चाहिए, राइट ना अक्षरा? सो नाउ लेट्स इमेजिन मेरे पास में ना आई हैव द फोर्स. अच्छा, मैंने कल के क्लास में अगेन बोला था कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द वेरिएबल फोर्सेज वी विल ऑलवेज बी गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, राइट? अनऑर्गेनाइज्ड फोर्स के उसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो द नेचर ऑफ दैट कि कब बढ़ रहा है कब घट रहा है. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, राइट? So we will only be talking about the variable force in this scenario, and in variable force as well we will be discussing a few questions based on the force that's dependent on the distance. ठीक है? And if you want we can also discuss the force that's dependent on time as well. बाकी ये वो सारी चीज़ें लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? We have to just have the grip over the concepts and we have to move further ahead. समझ में आ रहा है? Because अभी पूरा फाउंडेशन का क्लास चल रहा है तुम्हारा, and I am like only intended to give you the education विच इज़ कंसेप्ट बेस्ड. समझ में आ रहा है? सो दैट तुम आगे जा सको, ठीक है? चैप्टर कवर हो जाए अपना, दैट इज़ द मेजर इशू. समझ में आ रहा है? चलो, सो इन टुडेज क्लास वी विल बी सीइंग अ फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फोर्स दैट्स डिपेंडेड ऑन द डिस्टेंस. ठीक है? सो यहाँ पे टाइटल डाल लेना, फोर्स डिपेंडेड ऑन डिस्टेंस. कल का ही पूरा का पूरा डिस्कशन है, मैं इसको फोर्स डिपेंडेड ऑन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन जो भी तुमको बोलना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या बोल के चलूँगा, सी there are two scenarios, Krishna. The first scenario being that डिस्टेंस का मतलब क्या अक्षरा, कि मैं एक रैंडम पॉइंट से निकलूँ, स्टार्ट करूँ और मैं एक डायरेक्शन में चलता जाऊँ. सो जब मैं आगे जा रहा हूँ तो डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? सो इमेजिन द सिचुएशन, मेरे पास में एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ. तो अब एक बात याद रखना, टू रेड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी तुमको 99% केसेस में यही बोलेगा that the force and the displacement are acting in the same direction. So this is my F and this is my displacement S. ठीक है? अब होगा क्या, इनिशियल पोजीशन को वो ओरिजिन मान के चलेगा. सो लेट दिस बी द इनिशियल पोजीशन, जो हो जाएगा ओरिजिन. अब जैसे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इन द राइट साइड, इसका डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड होने स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक मूविंग इन द राइट साइड, बराबर. अब होगा क्या कृष्णा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, फोर्स भी वेरिएबल होता जाएगा. सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओवर हियर माय फोर्स विल बी डिपेंडेड ऑन द डिस्टेंस इटसेल्फ. ठीक है? तो एक्स के ऊपर मेरा फोर्स डिपेंड करेगा. नाउ बेस्ड ऑन दैट देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट इक्वेशन जो तुम यूज़ कर सकते हो, जिनसे तुम क्वेश्चंस बना सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, एंड वी विल बी गोइंग टू लुक एट द सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन द फर्स्ट सिनेरियो द फोर्स इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब plus 7x to the power 6. ठीक है? At every single time as the distance keeps on increasing, I have to find the work done. ठीक है? तो मैं दो इंस्टेंसेस दे रहा हूँ तुमको. फाइंड द वर्क डन व्हेन द ब्लॉक वाज एट द रेस्ट, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे, मतलब इस पॉइंट से ब्लॉक ने मोशन स्टार्ट किया है, अब वो बढ़ता जा रहा है टिल द पॉइंट x इक्वल्स टू 2 मीटर्स, राइट? तो 2 मीटर्स तक जो है इसका डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है. सो आई हैव टू फाइंड द वर्क डन. अक्षरा, सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 पे लेके जाने के लिए फोर्स का जरूरत है, राइट? है ना? सो इफ देयर इज अ फोर्स एंड इफ देयर इज डिस्प्लेसमेंट, देयर शुड आल्सो बी वर्क. समझ में आ रहा है? एंड द सेम वर्क आई हैव टू कैलकुलेट. ओके, आई एम टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नथिंग बट द डायरेक्शन इन द डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ. सो आई हैव टू फाइंड. ठीक है? एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चंस तुम लोग देख लेना. ठीक है? ऑल्दो आई हैव टोल्ड यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस कंसेप्ट इन लास्ट क्लास इज वेल, तुम एक बार देख लेना. मैंने क्या बोला था, आंख बंद करके, इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग सिंपली इंटीग्रेट द फोर्स. ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. जब अच्छा, और मैंने ये भी बोला था कि ये कब वैलिड है, इट इज़ ओनली वैलिड व्हेन द फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एक्स के ऊपर. तो मैं क्या बोलूँगा, सिंपली वर्क इज नथिंग बट इंटेग्रल ऑफ एफ डी एक्स या एफ डी एस.
तो यहाँ से इंटीग्रल ऑफ एफ का वैल्यू रख दो पूरा का पूरा, दिस इज नथिंग बट 3x का स्क्वायर प्लस दिस इज 4x का क्यूब प्लस दिस इज 7x टू द पावर 6 dx. Right now we have seen integral के कुछ properties, so I can separate the integrals to each of the term. तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3x का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल में आएगा 4x क्यूब dx एंड यहाँ से प्लस आएगा इंटीग्रल में 7x टू द पावर 6 dx. राइट, नाउ अगेन दीज नंबर्स 3, 4 एंड 7 दे आर कांस्टेंट, तो इनको इंटीग्रल से बाहर निकालो. सो इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 4 is integral of x का cube dx plus 7 in the integral of x to the power 6 dx. Right? Now that's the simple integral standard formula based. ये है x to the power n dx क्या आता है? This is nothing but x to the power n plus 1 by n plus 1. अच्छा, सिंस मेरे को लिमिट्स भी गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा था एट x इक्वल्स टू 0, लास्ट पॉइंट है मेरा x इक्वल्स टू 2 तक. सो अप्लाई द लिमिट्स एज वेल. सो लोअर लिमिट विल बी x इक्वल्स टू 0, अपर लिमिट विल बी x इक्वल्स टू 2. जिधर जिधर इंटीग्रेशन दिख रहा है आई विल कीप द लोअर लिमिट एज 0. सो लोअर लिमिट 0 0 0, इधर भी 0 0 0 एंड अपर लिमिट इज 2, तो 2 2 2 एंड यहाँ पे भी अपर लिमिट इज 2 2 एंड 2. राइट, तो अब मैं क्या बोलूँगा, आई विल हैव टू सिंपली पुट दिस इंटीग्रल इन द गिवन फार्मूला. सो 3 का 3 एज इट इज. सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है क्या आएगा अक्षरा, एक्स टू द पावर 3/3 ना. इसके लिमिट्स आर फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इक्वल्स टू 2 तक. राइट, प्लस में मैं क्या बोलूँगा, 4 है. इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4/4 ना. अगेन द लोअर लिमिट इज 0, अगेन द अपर लिमिट इज 2 प्लस 7 के जगह पे 7. अब x टू द पावर 6 का इंटीग्रल मुझे निकालना है, दैट इज नथिंग बट x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7. अगेन द लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज 2. सो 3 3 विल गेट कैंसिल, 4 4 विल गेट कैंसिल, 7 7 विल गेट कैंसिल. तो क्या बचा मेरे पास में, एक्स क्यूब, द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 प्लस इधर से बचा x टू द पावर 4, द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 प्लस मेरे पास में है x टू द पावर 7, द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2. नाउ पुट द अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट द लोअर लिमिट फ्रॉम द अपर लिमिट. तो सिर्फ एक्स क्यूब की अगर मैं बात करूं तो अपर लिमिट इज नथिंग बट 2, तो 2 का क्यूब खत्म हो गया, रख दिया सक्सेसफुली. माइनस अभी लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करो, सो लोअर लिमिट इज 0 का क्यूब प्लस अभी एक्स टू द पावर 4 की बात चल रही है, तो एक्स टू द पावर 4 के लिए अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करो 2 टू द पावर 4 माइनस लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करो 0 टू द पावर 4. यहाँ पे सिमिलरली एक्स टू द पावर 7 के लिए अपर लिमिट अप्लाई करो 2 टू द पावर 7 अगेन माइनस 0 टू द पावर 7. So this is nothing but 2 to the power 3 plus 2 to the power 4 plus 2 to the power 7. So 2 cube is nothing but 8, 2 to the power 4 is 16 and 2 to the power 7. कितना आएगा अक्षरा? 128. Right, 2 to the power 4 is 16, na? 2 to the power 5 will be 32, 6 will be 64, 7 will be 128. Now add all of this. ठीक है. So 8 plus 6, 14 plus 8 is 22 go 2, carried is 2 again. Now this is 1 plus 2, 3 plus 2, 5. So the work is nothing but 152 joules. Understood? Is it clear, all of you? Yes, sir. Now I am giving you a few more questions. You have to try it by your own selves. ठीक है? So question is, find the work done by the force. Find the work done by the forces. Number 1, F is equals to x का square from x equals to 0 to x equals to 1 meter. See, the x is nothing but the displacement from the origin. Second scenario, 7x, F is equals to 8x. ठीक है, from x equals to again same 0 to x equals to 2 लेना, 2 meters. ठीक है, third scenario will be like F is equals to 4x cube plus 5x to the power 4, again from x equals to 0 to x equals to 1. 2 meters. ठीक है, third scenario will be like f is equals to 4x cube plus 5x to the power 4, again from x equals to 0 to x equals to 1. 2 meters. ठीक है, third scenario will be like f is equals to 4x cube plus 5x to the power 4, again from x equals to 0 to x equals to 1.
चलो, have a quick try. Let's see. Sorry, tell me again. So first one is 1 joule. Okay, first one is 1 joule and the second one is 8 joule. third one. What about you, Akshara? Krishna? Are you getting the same answers as well? Chalo, let's try. No, sir. Okay, let it be. So we will be seeing the solutions. So the first question states that f equals x का square. Okay. The value of the work done W is nothing but integral of f dx. Right. अभी f के जगह पे जो भी इक्वेशन है वो रखो. So that is nothing but integral of f के जगह पे मैं रख रहा हूँ simply x square dx. Right. So what will be the integral of x squared? It's nothing but x का cube by 3 ना. अब एक और चीज़, from x equals to 0 to x equals to 1. So the lower limit will be x equals to 0 and the upper limit will be x equals to 1. Right? So इधर भी क्या करूँगा मैं? Lower limit I will put 0, upper limit I will put 1. So to calculate this integral, I will put the upper limit first. So this is nothing but 1 का cube divided by 3 and I will subtract the lower limit from that. So 0 cube by 3. So 0 cube by 3 is 0 itself anyhow. So the final answer is nothing but 1 by 3 joules. Understood? Is it visible, all of you? Chalo. Now moving towards the second question. Second question states that f equals to 8x. Again the same formula, na? So I'll get the formula of w is nothing but integral of f dx. Right? So that is nothing but integral of f ke jagah pe what I will do? I'll put the value as 8x dx. Right? Since the number 8 is constant, I'll take it out of the integral. So I'll be left with integral x dx. The lower limits are from, put the limits, huh? The lower limit is x equals to 0 and the upper limit is x equals to 2. So the lower limit is 0 and the upper limit is 2 as well. Right? So the final answer will look something like integral of x dx from lower limit 0, upper limit 2. अब integral calculate करो. So this is nothing but 8 times of x to the power 1 plus 1 or 1 plus 1 मतलब 2 by 2, right? So the lower limit will be 0, upper limit will be 2, 2 ones are 2, 2 fours are 8. So this is nothing but 4 times of x ka square provided the lower limit is 0, upper limit is 2. Now I will substitute the upper limit. This is nothing but 4 times of 2 ka squared, right? Now I'll subtract the lower limit from the upper limit. So 4 times of 0 ka square. So this is nothing but anyhow 4 times of 2 ka square is again 4 minus 4 into 0 ka square is 0 itself. So the work done will be 16 joules. Understood? So this is the second answer. Third question. Third question में क्या था? 4x cube plus 5x की power 4 ना? So question number 3 was f equals to 4x का cube plus 5x की power 4. Again I'll write the same equation, I'll write the same formula. Work is nothing but integral of f dx, right? So that is nothing but integral of, what's the value of f? Force is nothing but 4x ka cube plus 5x ki power 4 dx, right? I'll separate the integrals and I will write that is nothing but integral of 4x ka cube dx plus integral of 5x ki power 4 dx. Got it? Now what I will do, I'll keep this 4 and this 5 outside the integral ka sign. So I'll be left with 4 into x integral of x cube dx plus 5 into integral of x की power 4 dx. Just see the limits once again. So the limits were x equals to 0 से लेके x equals to 1 तक. So the lower limit was 0, upper limit was 1, lower limit was 0, upper limit was again 1. So this is nothing but 4 times of x cube का integral आएगा x to the power 4 by 4 plus 5 times of x to the power 4 का integral will be x to the power 5 by 5. So 5 will get cancelled, 4 will get cancelled since the lower limits and upper limit are same. So lower limit is 0, upper limit is 1. So I'll first put the upper limit and then I will put the lower limit. It's all up to you. तुम independent रखना चाहते हो independent रखो या combined रखना चाहते हो combined रखो. तो I'll do one thing, मैं combined रख के देखता हूँ. मतलब पूरों के लिए पहले x equals to 1 रखूँगा और पूरे expression के लिए x equals to 0 बाद में रखूँगा. So it will be nothing but 1 to the power 4 plus 1 to the power 5 minus of 0 to the power 4 plus 0 to the power 5. So it's anyhow gonna be 1 plus 1, so it's 2. So the work done will be 2 joules. Understood? Is it clear? Acha, unit of work is joule, याद रखो.
Anyhow, we're going to talk about the SI unit, so I'm not going into much details of it. Okay. Understood? Now, let me give you a question. Okay. An object of mass 10 kg is subjected to a force, to a variable force that changes with see, अभी तक हमने distance का देख लिया था ना. The force was dependent on the distance. Now I'm going to think about what if the force is dependent on the time as well. ठीक है? With time as f equals to t squared plus 2t plus 5 और t squared plus 2t itself. ठीक है? और एक काम करो 3t squared plus 2t 3t squared plus 2t. Find the work done. Find the work done by the force in first 3 seconds. Chalo. Will you try or should I directly tell you the answer of this? See, this is a little different. Okay, so here the force is dependent on the time. So the force is changing with respect to time, not with respect to the displacement. Right. So anyways, you can take this question as your homework. Huh? Now, Acha, I hope you remember the formulas as the acceleration is nothing but dv by dt, right? Again the formula was speed was nothing but ds upon dt, है ना? और क्या बोला था मैंने? The value of acceleration is nothing but v dv by dx, ना? Understanding? और क्या देखा था अपन ने? We also saw that the speed of velocity was nothing but integral of a dt. Again we saw the distance was nothing but integral v dt, right? Provided the acceleration, speed, distance, they are the functions of time itself, है ना? Is it correct? Yes, sir. Okay. चलो. So take a question. The force on an object changes with position, changes with its position as f is equals to x का square 3x का square plus 2x plus 5. ठीक है? Full stop. Find the speed of the object if the object starts from rest. So find the speed of the object after, add ले लो, at x equals to 4 meter if it starts from rest. If it starts from rest. चलो try करो. ठीक है?
अच्छा, द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ले लो, ऑफ मास 1 kg. Okay, the force on an object of mass 1 kg changes with its position as f equals to 3x का square plus 2x plus 5. Find the speed of the object at x equals to 4 meters if it starts from rest. Okay. You must be having a good command over these formulas, huh? To go ahead with any chapter in physics. So if you have to move ahead, you must be having a very good command over these concepts. याद रखो, ठीक है? चलो, we cannot take much time. Huh? So Akshara, what is the value of force? F is nothing but 3x का squared plus 2x plus 5. Right? Can I write the value of F as ma Akshara? So मेरे को ना, I just have to find the value of acceleration. So what can I say about the acceleration of it, Akshara? Soumya, acceleration is nothing but force upon mass ना कृष्ण. मास कितना है उसका? 1 kg है. तो फोर्स की जगह पे पूरा का पूरा रखो. दिस इज नथिंग बट 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. ये हो गया फोर्स होल डिवाइडेड बाय मास कितना है? 1 kg. सो एक्सिलरेशन का वैल्यू क्या होगा? एक्सिलरेशन इज नथिंग बट अगेन 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. अब देखो, व्हाट आई हैव टू यूज ओवर हियर इज दिस फार्मूला. अंडरस्टैंडिंग? एक्सिलरेशन इज नथिंग बट वी डी वी बाई डी एक्स. सो मैं क्या बोलूँगा? एक्सिलरेशन के जगह पे आई विल पुट वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस दिस इज 2x एंड प्लस दिस इज 5. सिंस दिस dx इज इन डिवीजन, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊंगा इन द ऑपोजिट साइड. सो क्या बचेगा मेरे पास में? आई विल बी लेफ्ट विथ वी डी वी इज नथिंग बट पूरा का पूरा 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 multiplied by this term dx, right? Now since I'm left with dv in the left side and dx in the right side, I will integrate both of them, right? So integrating both of them. So मैं क्या करूँगा? देखो, initial limit speed vi will be the initial lower limit, और initial speed x equals to 0 will be the lower limit. Here initial final speed vf will be the upper limit, and यहाँ पे upper limit क्या दिया है मेरा? x equals to 4 meters ना. So this is x equals to 4. Understanding? तो what I will do, I will integrate both sides. So v का इंटीग्रल क्या आएगा? v का इंटीग्रल is nothing but v square by 2 provided the lower limit is vi and upper limit is vf, final speed. That is equals to इंटीग्रल, इसका भी इंटीग्रल निकालो. 3x का स्क्वायर का इंटीग्रल is nothing but x क्यूब प्लस 2x का इंटीग्रल is nothing but x का स्क्वायर. हाँ, आगे बोलो. प्लस 5 का इंटीग्रल is nothing but 5x. Provided the lower limit is x equals to 0 and the upper limit is x equals to 4. Right? Now I'll put the upper limit and lower limit in both of the scenarios. तो v square के जगह पे v final का square लिखो. So vf का square divided by 2 minus अब initial speed रखूँगा vi का square divided by 2. That is equals to अभी x equals to 4 रखो and then x equals to 0 रख के निकालो final answer. ठीक है? So when I'll put the value of x equals to 4, the upper limit will become 4 का cube plus this becomes 4 का square plus this becomes 5 times 4. राइट? अब लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करो. दिस बिकम 0 का क्यूब प्लस दिस इज ऑल्सो 0 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 0. सो एनी हाउ दिस होल एक्सप्रेशन इज गोना बी 0. सो आई विल बी नेग्लेक्टिंग दिस एक्सप्रेशन. तो मेरे पास में आएगा. अच्छा, और एक चीज़ याद रखो, द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है? इनिशियल स्पीड विल बी 0 ना. सो वी आई का वैल्यू भी 0 होगा. सो आई विल बी लेफ्ट विथ वी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4. 4 का क्यूब इज नथिंग बट 64. 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट 16. चलो, let me write it. 64 plus this is 16 plus 5 4s are 20, right? So that is nothing but 64 plus 36, right? So final speed का square divided by 2 is equals to 64 plus 36. That becomes 100. So I'll be left with vf का square. ये 2 डिवीजन में है, उधर लेके जाओ मल्टीप्लिकेशन में. So 2 into 100
and I'll be left with VF का square equals to 200. Taking square roots on both sides, I'll be left with the final speed as nothing but under root 200, or I can even write it as 100 into root 2. Root 100 into 2, that's nothing but 10 root 2 meter per second, right? So this is the final speed of the object at x equals to 4. Understood? Yes, sir. Chalo. Now some standard questions और कुछ questions देखते हैं. See, there are n different types of questions possible in this chapter, but throughout you have to be perfect in the basic concepts. अब यहाँ से I can say that this chapter is nothing but the applications of Newton's law itself. तो imagine करो this is the wedge, ठीक है? wedge वाले block के questions लेंगे हम. Let's say the angle of inclination of the wedge be theta, ठीक है? Let's say ये पूरा का पूरा length है a side, ठीक है? And there is this mass, or there is this block of mass m placed on the top of the wedge. तो question लिख लो, a block of mass m is placed on top of a wedge of angle of inclination theta, for example, if the base is of length a, if the length of base is a, length of base is a, full stop, find the work done by gravity. Find the work done by gravitational force or gravity in sliding the block. चलो try करो. Akshara, tell me, whenever we see these wedge block questions, मैं क्या बोलूँगा? नीचे के साइड में नेट एक्सिलरेशन कितना होगा इसका, इस ब्लॉक का? I hope you remember this, because we studied it n times. mg cos No, mg cos theta किधर लगेगा सोनिया? sin theta. mg sin, that's the net force, right? So नीचे के साइड में फोर्स कितना लग रहा है throughout the motion? That's nothing but m times g times of sin theta. Correct, Krishna? है ना बोलो? Yes. Right. So that's the net force in the downward direction. अब displacement कितना हो रहा है? I have to find. I don't know how much displacement is happening. सबसे पहले चेक करो, force in the downward direction लग रहा है, क्या the displacement is acting in the same direction as the force? Yes, sir. Right. So the displacement is in the same direction as that of the force. So I will simply write that the work done. अच्छा ठीक है, force भी constant है ना throughout the motion. So I'll check the two things. The first situation that I will be checking is that if the displacement is in the same direction as that of the force. Okay, the displacement is in the direction of the force. The second thing that I will be checking is that is the force constant. So the force is constant. Is the displacement also constant? पूरा displacement fix हो रहा है ना, मतलब cover करने के बाद में कुछ ना कुछ fixed है वो displacement. So I'll simply write the formula as W is equals to F into S, where F is the force and the S is the displacement. Now F का वैल्यू तो मुझे पता चल गया. F is nothing but mg cos theta, mg sin theta, sorry. So force is nothing but mg times of sin theta. अब डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नहीं है. आई हैव जस्ट द वैल्यू ऑफ बेस ए. अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा अक्षरा? सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. कैसे निकालूंगा मैं? इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा अक्षरा? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब a बाय s ना, राइट? Yes, sir. हाँ, तो अभी क्या होगा यहाँ से? ये s इन्वर्ट क्या करेंगे? अल्टरनेट हो ना, इज इट करेक्ट? अल्टरनेट प्रॉपर्टी होता है, कौन सा होता है? और डायरेक्टली चेक करो यार, s इक्वल्स टू क्या आएगा इधर से? a अपॉन cos थीटा, राइट सोमिया? Yes, sir. Put this value of s in the work. So w is nothing but mg के जगह पे mg, sin थीटा के जगह पे sin थीटा as it is, multiplied by s के जगह पे क्या लिखूंगा मैं? Multiplied by a by cos थीटा, right? है ना? So the work is nothing but m times of g times of a multiplied by क्या आएगा? sin थीटा by cos थीटा. क्या होता है? Tan theta.
mga tan theta. So this is the work done by the gravitational force. Understood? In sliding the block. समझ में आया? Now there are some more questions as well. तो अभी थोड़ा सा एटवुड्स मशीन के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है? सो राइट अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट्स, अब यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस था, अभी इधर मैं फ्रिक्शन दे रहा हूँ, ठीक है? अ ब्लॉक lies on a rough surface as shown. चलो ड्रॉ करो. सो दिस इज माय रफ सरफेस, ये हो गया मेरा ब्लॉक. द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल्स टू 20 kgs. Right now what I am doing, let's say the coefficient of friction mu over here, mu is equals to 0.2 ले लो, और मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ F is equals to 20 न्यूटन का, ठीक है? करेक्ट ना? as shown, full stop. Find the work done by the friction. Find the work done by the friction when from the beginning. एक काम करो, starting from rest till its speed becomes let me design it. 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इट स्पीड बिकम्स 8 मीटर पर सेकेंड. चलो बन गया. इट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे. चलो सबसे पहले व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? चलो, so the mass of the block is 20 kgs, right Akshara? Again the value of coefficient of friction कितना है? mu equals to 0.2, right ना? Yes, sir. Okay. Is it possible? नहीं ना, 20 न्यूटन इज वेरी लेस फोर्स. एक काम करो, तुम एक काम करना, ठीक है? म्यू एम जी का वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 200 न्यूटन. 200 इंटू फ्रिक्शन फोर्स ही होगा 40 न्यूटन का. तो एक काम कर लो, इधर 60 न्यूटन ले लेना, ठीक है? चलो अब ट्राई करो क्वेश्चन को. ओके, नाउ वी विल बी सीइंग द क्वेश्चन. चेक करो बाहर का फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर. द नेट एक्सटर्नल फोर्स वाज एक्टिंग 60 लोगे, या फिर एक काम करो, बेटर रहेगा 56 ले लेना, 56 न्यूटन. चलो हाँ अक्षरा बताओ क्या आएगा आंसर? फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो सकता है? म्यू एन मतलब 0.2 इंटू एम जी का ना 200. तो दिस इज नथिंग बट 40 न्यूटन. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा पीछे? 40 न्यूटन थ्रू आउट द मोशन. एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है सोम्य ऑन दिस ब्लॉक? द एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट 56 न्यूटन. कैन यू टेल मी व्हाट्स द नेट फोर्स एफ नेट ऑन द ब्लॉक? 56 minus. So 60 Newton is the force acting on the block. ठीक है? Now I'll find the acceleration. So acceleration is nothing but force upon mass, right? So this is nothing but 16 upon 20. 4 4s are 16. 4 5s are 20. अब मेरे को because I've been told that the block is starting from rest, तो मैं क्या करूँगा? I'll apply the formula as v equals to u plus et, or even if you want you can directly apply the formula v square is equals to u square plus 2as, right? Now since the speed of the block is increasing, so I'll keep the acceleration to be positive. So final speed v square is nothing but 2 times of the value of acceleration is 4 by 5 multiplied by the value of distance s. I don't know, right? Final speed कितना बोला अक्षरा? 8 meter per second, right? I'll substitute the value of final speed as 8 meter per second over here. So this is 64 equals to 8 by 5 multiplied by distance s, right? So what I'll do, I'll directly try to write that the value of this is equals to 8 is equals to s divided by 5. So यहाँ से
डिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 40 मीटर्स। अंडरस्टूड? सो 40 मीटर का डिस्टेंस ब्लॉक ने ट्रैवल कर लिया है। द फ्रिक्शन फोर्स थ्रू आउट द मोशन दैट वाज एक्टिंग वाज 40 न्यूटन, राइट? सो द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट एफ बार डॉट एस बार, है ना? दिस इज माय फॉर्मूला। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है सौम्या? इन द लेफ्ट साइड थ्रू आउट द मोशन। एंड वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक थ्रू आउट द मोशन इज इन द राइट साइड, है ना? सो बोथ आर ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या है? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम? 180 degrees, 180 right? degree. So this is nothing but f into s into cos theta. Cos theta की जगह पे cos 180 रखूंगा. What's the value of cos 180? -1, right? Substitute. So the value of friction force, देखो यहाँ पे work done by friction है, so friction force ही आएगा and displacement in general आएगा. तो the force of the friction was 40 Newton throughout the motion. The displacement was again 40 meters and the cos theta is -1. So this is nothing but -1600 joules. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, याद रखो, ऑलवेज ऑलवेज। डज नॉट मैटर वॉट एवर द डायरेक्शन और वॉट एवर द मोशन इज, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव, राइट? बिकॉज इट्स नेवर गोना हैपन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. Understanding? Now I'm giving you a few more questions based on that. Let's see how many of you can solve this. Okay. So the question states that in the given situation, find the work done. Find the work done by the 2 kg block when the distance of 10 meters is covered. चलो फिगर ड्रॉ करो. So this is the block of mass 2 kgs and this is the block of mass 18 kgs. ठीक है, अब दोनों का मैं पुश कर रहा हूँ, राइट, विद द फोर्स F इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना. आई एम टेलिंग वर्क डन बाय द 2 kg ब्लॉक. हाँ, मैंने क्या बोला था? वेन एवर वी से वर्क डन, वी से द वर्क डन बाय अ गिवन फोर्स. यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्क डन बाय 2 kg ब्लॉक. ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली करना क्वेश्चन को. आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन लिख लेना. फाइंड द वर्क डन. फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, सो दिस इज माय नॉर्मल फोर्स. स्प्रिंग का जो वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट्स इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर. लेट्स से 10 kg का ब्लॉक ले लेना इधर से तुम, एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ F इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन. ठीक है, एंड इफ पॉसिबल लेट्स टेक द वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू इक्वल्स टू 0.7 ले लेना यहाँ से. ठीक है, करेक्ट ना? चलो, and next question, see these will be the questions that I will be starting tomorrow's class with. So next question will be find the work done by tension in the Atwood's machine as shown. In the Atwood's machine as shown. ठीक है, so this is my Atwood's machine, and so this is a pulley, massless pulley है, massless pulley, and this is a block of mass मैं बोल रहा हूँ 10 kgs,
and this is a block of mass 20 kgs. ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए अभी तक सॉल्व? 3 और 2 दूं? चलो, so imagine I have this situation, okay? This is the elevator, ठीक है, लिफ्ट है ये. It is coming up. A block of mass 20 kg is placed inside the elevator, ठीक है, and the elevator is coming with acceleration of 2 meter per second squared, ठीक है. Find the work done. Find the work done by the elevator, by the elevator in first 3 seconds. Okay, now next question, last question थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है. So let's say this is the pulley attached, right? Let the angle of inclination be 60 degrees और ये angle of inclination भी 30 degrees, right? और यहाँ पे coefficient of friction mu equals to 0.2 ले लेना, इधर coefficient of friction mu equals to 0.3 ले लेना, ठीक है. This is a block of mass 20 kgs, okay, and this is a block of mass 30 kgs. So the question states, find the work done. The work done by friction on number 1 20 kg block, 20 kg block, and number 2 on 30 kg block. Sure, ठीक है, अंडरस्टूड, बराबर दिया मैंने क्वेश्चन ये. ग्रेट. अच्छा एक काम कर लेना इधर, इफ़ पॉसिबल 170 हो जाएगा, 0.5 कर लेना इसको. चलो, सो दीज आर द 5 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बिफोर कमिंग टू टुमारोज क्लास. देखो रियल लाइफ एप्लीकेशन यूज़ करना सीखो वर्क पावर एनर्जी के. एंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन इटसेल्फ वी विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट सेशन. इसके प्रैक्टिस वगैरह करो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑल ऑफ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एनी हाउ, ठीक है. अच्छा एक काम करना, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इन एटवुड्स मशीन एज शोन. तो नेट वर्क रहेगा इधर, फाइंड द नेट वर्क डन, ठीक है. और एक काम करना, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो. इन द प्रीवियस क्वेश्चन या इन द अबव क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन done by tension on number 1 10 kg block and number 2 is 20 kg block. ठीक है, चलो, it's good for today, sufficient for today. So before coming to tomorrow's class we have to revise all of this. समझ में आ रहा है? चलो, अंडरस्टूड. आज का सारा सेशन समझ में आया ऑल ऑफ यू? इज माई वॉइस क्लियर? चलो ठीक है. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और एल्स वी कैन स्टॉप हियर फॉर टुडे.